without any fears. How many of us want to enter or have already entered or are in the post-menopause period? We want to enter it gracefully, age gracefully, and without any anxieties. Anybody? Okay, I can see a few hands going up. Just a few, waiting for some more. Okay, a few more hands going up. Sarabjit ma'am smiling, a big smile. We want to age gracefully because we have to take care of family. We cannot afford to fall ill. Yes or no? Does everybody agree with me? क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं बीमार पड़ने के लिए? नहीं कर सकते, क्योंकि हम माँ हैं, हम वाइफ हैं. We have to take care of our parents. We have a bigger responsibility in society. तो क्या करेंगे आप अपने हेल्थ को ध्यान में रखते हुए? कितने लोग उत्सुक हैं जानने के लिए? How many of us are curious to know what exactly do we need to do so that we get into menopause and the transition is very, very smooth? How many of us are willing to know? Please write in the chat box. Okay, so without wasting much time, people who are new to this, I would not take much of your time. Swami Raj Vibhuji will be joining us, or he has already joined. Let me just check. And he will give you an insight as to how you should get into menopause or make your transition smooth. Yes, we want to know for our daughters, we want to know for our parents, we want to know for all our kith and kin. Okay, so Swami Raj Vibhuji is here. Namaste. Good evening, Swamiji. Please unmute yourself. Okay. Yes. Am I audible? मेरी आवाज आ रही? रचना जी पिन कर दीजिए मुझे. कर दिया? Okay. So, Women's Day. Women's Day. What does it mean? It happened that the fundamental crucible of was sleeping. जो मूलभूत आधार है जीवन का वो अवेलेबल नहीं था. Then what? To make it into a beautiful creation, Shakti played a trick. Shakti ने एक चाल चली. The fundamental crucible of life, which is not available, is called as Shiva. And then Shakti played a trick around him. You can also understand it as Shiva was sleeping and Shakti wooed him. So he got up with a bang. That's what we call as big bang. So he got up with a bang, and then she used that getting up to create whatever she wanted. This is the fundamental of life. If you understand this, this is what you have also gone through.
देखिए, आपको किताब पढ़ के कुछ लाइफ के बारे में नहीं समझ में आने वाला। आप जीवन में जो करते हैं ना, उसी से समझ में आता है। So it is female, it is Shakti, it is feminine, which uses male to create whatever she wants. आप यही कर रहे हैं कि नहीं? You are doing this throughout your life. You want your male to work, but to work for you. है ना? हक जताते हैं ना अपने। जो मजदूरी करके लाता है आदमी, उस पर हक आप किसका होता है? आपका होता है, उसका भी नहीं होता। So it is female for which she created. It is for her she created the whole existence. पूरी सृष्टि का निर्माण शक्ति ने किया है, अपने हिसाब से किया। याद है when you conceived, how did you conceive? जब आपने गर्भ धारण किया तो कैसे किया था? आपने एक मेल की उत्तेजना को ही तो इस्तेमाल किया ना। आपको उसका डर नहीं लगता, आप यूज करते हैं उसको। So the whole existence is for females. ये आप भूल गए दरअसल। You have forgotten it. भूल गए शायद आप। So let me remind you again. मुझे याद दिलाना है थोड़ा सा, बस और कुछ नहीं। You are more powerful than what you can even imagine, but वो वाली बात है ना, आपको याद नहीं शायद। तो मुझे केवल याद दिलाना है आपको, द होल एग्जिस्टेंस इज फॉर यू। जब आपने एक मेल को इस्तेमाल किया गर्भ धारण करने के लिए, एंड यू प्रोड्यूस अ ब्यूटिफुल बेबी, यू ओन दैट बेबी, इजंट इट? आपने उसे ओन किया ना। आप कितने भी उसको डांटते हो, थप्पड़ मारते हो, बट आपके जितना ओन कोई नहीं कर सकता ना आपके बच्चे को। एंड दिस ओनरशिप in one word is called as मां। तो आपका स्ट्रेंथ क्या है? व्हाट इज द बेसिक कोर स्ट्रेंथ ऑफ यू? इट इज ओनरशिप। इट इज ओनरशिप। इसी ओनरशिप को मां कहते हैं। एंड दिस डजंट जस्ट मीन टू प्रोड्यूस अ बेबी एंड हैव एन ओनरशिप ऑन योर बेबी। ये केवल इसकी बात नहीं है। योर ओनरशिप इज कॉल्ड एज मातृत्व। व्हाट इज मातृत्व? एक आपने बेबी पैदा किया तो उससे मां बन गए? नहीं, यू ओन दैट बेबी, दैट इज व्हाई यू आर अ मां। ओनरशिप को मातृत्व कहते हैं। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि when you own just one small little part of existence and you don't own the whole existence, that is where the blunder happens. Whenever, you know, when a woman is fierce, or सबसे ज्यादा fierce कब होती है? When does a woman have a fiercest attitude? जब उसके बच्चे पे कोई खतरा आता है, in some kind of a risky situation, she will do anything to protect her baby, isn't it? एक लायनेस से डरता है when she is protecting her baby. Although physically lioness is very not as strong as a lion. It doesn't matter. उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिकली कौन स्ट्रांग है कौन नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। When there is a situation
when the situation is not so fine, it's a risky situation, then you limit your ownership. जब risky situation होता है ना, तो आप अपनी ownership को limit कर देते हो. You just protect yourself or what you call as your baby or your thing. आप जिस पे ownership जमाते हो ना, बस उसी को आप protect करते हो. When there is risk all around, and this attitude has happened for many centuries now. कई centuries से ये attitude, I'm talking about Indian women. I'm talking about Indian women. So for many centuries, this has somewhere embedded in a woman. कहीं ना कहीं ये अंदर घुस गया है. That is why women are not participating that much in the affairs of world. दुनिया के कामकाज में औरतों का पार्टिसिपेशन कम हो गया. आज आपको इससे निकलना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल डिस्ट्रॉय द नेक्स्ट जनरेशन. आपके आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर देंगे. So you will have to connect with what is your history. इस वक्त में सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी जड़ों को खोजी. Who are you? कौन है आप? अपनी आइडेंटिटी को पहचानें. So with a little story, I'll give it a direction. I'll tell you a little about how to conduct life. प्रैक्टिकली एक प्रोसेस भी करेंगे हम. एक प्रोसेस भी मैं आपको सिखाऊंगा जिससे यू कैन गेट इनटू, यू कैन टेक केयर ऑफ ऑल दोस डिफिकल्टीज. बट लेट्स स्टार्ट विद दिस स्टोरी. एक छोटी सी स्टोरी. वन डे ब्रह्मा, विष्णु एंड महेश वर एक्चुअली quarreling. ये तीनों आपस में बहस कर रहे थे. हु इज द मोस्ट पावरफुल? सबसे पावरफुल कौन है? And you know, there is a person called Narad. It is your cunning mind, actually. Narad कौन है? It's your mind, cunning mind, who doesn't belong to any group. Today, India is like Narad, you know. Ukraine, Russia, America, doesn't care whose side. सबसे अपना अपनी दोस्ती, किसी से बैर नहीं है. So Narad is like that. It is your cunning mind, which doesn't take side. So Narad said, अरे why you three fighting? तुम तीनों में से तो कोई भी पावरफुल नहीं है. And he said, तुम तीनों में से तो कोई भी पावरफुल नहीं है. So they were aghast. ये क्या बोल रहा है? So they asked Narad, then who is the most powerful? Narad said, everybody knows. You three don't know. सबको मालूम है, आप तीनों को ही नहीं मालूम. And all the three were surprised. तीनों के तीनों बड़े, ये क्या बात है, हमें नहीं मालूम. So Narad said, everybody knows. Anusuya, Mata Anusuya is the most powerful person in the universe. आपके ही शिष्य है ना अत्रि, उन्हीं की वाइफ है. महादेव के शिष्य अत्रि, उनकी वाइफ. तो तीनों कहने लग गए कि भाई ये कैसे हो सकता, हाउ कम दिस, ये तो हो नहीं सकता. नारद से, नो, यू कैन डिफीट हर. आप लोगों में से कोई भी उनको हरा नहीं सकता. नाउ फॉर अ फेमिनाइन, एक फीमेल कब हारती है? एक फीमेल कब हारती है? एक ही टाइम पर हारती है.
एक ही टाइम पे, जब उसकी निष्ठा भंग होती है, और कभी नहीं हार सकती फीमेल। When she decides something and move away from that, only then a female loses. Otherwise, nobody can defeat a female. So she is very constant on something. है कि नहीं है? आपका बच्चा मर्डर करके भी आएगा तो भी अच्छा है, कुछ गलती हो गई, किसी और वजह से हुई होगी, हाँ, उसकी बहू की वजह से हुई होगी, बीवी की वजह से, उसकी वजह से नहीं, वो खराब थोड़ी हो सकता। यस और नो? आपका बच्चा गलती भी करता तो भी वो गलत नहीं है। यू आर सो फर्म, आप इतने निष्ठा है आपको अपने बच्चे के ऊपर, क्योंकि आप प्रेम से देखते हैं। नहीं, कुछ गड़बड़ी, कुछ किसी ने और ने बहका दिया होगा इसको, है ना? बिकॉज आप उसके साथ में इतने संबंध रखते हैं, आप हट नहीं सकते। दैट इज हाउ मदर शुड बी, क्योंकि प्रेम की दृष्टि से देखेगी हमेशा। उसकी निष्ठा गई तो हार जाएगी। फॉर अ फीमेल देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग, एंड दैट इज हाउ द होल एग्जिस्टेंस इज। देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग। When you move away from your commitment, then it's all gone. Because it's your universe, it's your creation. आपका ही तो creation है ना. So those three, Brahma, Vishnu, Mahesh, these three decided, अच्छा ठीक है, हम उसके निष्ठा को भंग करेंगे. Okay? हम अनुसुईया की निष्ठा को भंग करेंगे. So they looked for an opportunity. There was a morning time when Atri was not in ashram, and Anusuya